All right. Thanks for the kind introduction, Ridhima. I'm really, really glad to be doing this today all with you and seeing the demand of the session. Last time we decided to do this once again, just for you guys. I just want whole energy and enthusiasm filled in the inboxes, filled in the chats, so that I understand what exactly you're looking for, and I can make the most of this session. At the same time, I have really, really good giveaways. So do watch till the end so that we could have some energy going. All right. So before we start the session, I really want to understand, what do you guys, how do you see personal branding as? You could raise your hand, you could fill up the chats, whatever. Just tell me what personal branding means to you as a person. Anyone? All right, please go ahead, Advana. Hi, I am Tanya this side, founder of Advana. So personal branding to me, it means speaking out as a founder, you should be able to connect with your audience and portray your business challenges, what you do in your daily life as a founder and everything. So that's what personal branding to me means. Yeah, so basically being authentic with your branding. Absolutely right, Tanya. Anyone else want to add what personal branding means to them? Branding is probably what you are recognized for. When you're not in the room, how do people relate to you? Exactly. So being in that top 1% bracket, so that whenever someone thinks of you, whenever they think of a service or a product, you are at the top of their minds. So being in that top 1% bracket is very important, specifically when we know that the markets are flooded with what you are doing, just the same way what others are doing. So to me, exactly, this is what branding means. It means being authentic, being credible, being able to showcase your persona in such a way that your target audience can actually resonate with you. And to give you one really amazing example, so I had interviewed one of the ladies. She used to call herself Purple Lady. So she was wearing full uh, while I was interviewing her, she was really wearing purple dress. She had purple hair. Her nail paint was purple, and that is how I could always remember her, because she was in that bracket where I could see her as her authentic self, her her introvert nature. And she told me that whenever she walks out on the streets, people come to her and they want to talk to her just by the way she looks. So branding is obviously about voicing out what you stand for, what characteristics do you stand for, and how you portray them whenever you go on any place, right? So can we start with the slides now, Radhima? Could you please switch on the PPT? So, guys, as she is doing that part, let me tell you a bit about my story. I never wanted to become a personal branding strategist. It was just a byproduct of the value I could give to my audience, and slowly and gradually, I I did rise up the ladder. So I was doing my job in Accenture, and I was associated with one of the Google projects. And that was the time 8 years back when I was just sitting in my office cubicle. I stumbled upon reading about an article of how you can make a strong personal brand on LinkedIn. This happened 8 years back, approx. And that time, I was just, I always saw LinkedIn as a job seeking platform. So, never knew that it was something I could use to talk about my writing skills. But that day changed my life. That day, from that article, I incorporated two things in my daily routine. The first one was writing consistently on the platform, just sharing my experiences of writing, just sharing what I believed about, what I resonated with. And I started seeing a change when more and more people started connecting with my stories, and they started trusting me with what I could do with their brands.
So it was a turning point in my life that also helped me to quit my job. Today I have more than 5,000 posts on the platform, and the only thing I owe it to is consistency and visibility that I could build in the right way with the right kind of audience at the right time. So that is exactly what personal branding to me is. It's a byproduct of value you can provide to your audience. It's not about just, you being in a curtain hidden somewhere. It's about you speaking out, you voicing out what you stand for. Your tone, your style, your consistency are three important, very important aspects of building a personal brand. And we will talk about it more as we move through. All right, can we move to the next slide? So we all know how important LinkedIn as a platform is. It is one of the biggest platform when it comes to connecting and interacting with other professionals, industry leaders, and establishing global interactions with these people. So the most important part when it comes to being on LinkedIn as opposed to Instagram is the professional tone, the consistency in your style. Those are the things people look for, especially when you are interacting on LinkedIn as a platform, unlike Facebook or Instagram. ठीक है, हिंदी में I would also be using हिंदी. So आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहां आप लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो. इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं. दे आर देयर इज अ ह्यूज you know persona. I would say there are a whole lot of people who are using LinkedIn daily. Okay, next slide. इन स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चलता है that how popular LinkedIn as a platform can be. 40% of monthly active users use LinkedIn daily. So how important it is for you to able to leverage this platform. 90 million LinkedIn users are senior level influencers. आप सारे मोस्टली फॉलोअर्स, आप मोस्टली सारे फाउंडर्स हो, एंड यू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, राइट? To give you the first level of encouragement. तो उसके लिए LinkedIn is the best platform to find these investors globally. So I think that is why you have to be on this platform to be able to talk about yourself, your success stories, your failure stories, what exactly you stand for, your company. So this is the best platform, unlike Instagram, Facebook, जहां आप mostly visuals के through interact करते हो, not through written content, not through long form content. Next slide. It's your gateway to build powerful business connections. So maybe you don't know, but Ridhima and I, we also connected on LinkedIn. And then, we got together to make this happen for you today. So this is the power of collaborations. This is the power of interacting with the right people in the industry so that you get the exposure that you need to be able to talk about your brand. Okay. And then ऑब्वियसली जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म तो है ही लिंक्डइन, बट शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख के यू कैन रीच द राइट पीपल. एंड जो भी आपके इंप्रेशंस होते हैं, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस, दे एक्चुअली गिव यू अ बूस्ट. यू गेट स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गेट एज फाउंडर्स, यू कैन गेट सम अपॉर्चुनिटीज लाइक स्पीकिंग ऑन पॉडकास्ट. सो वो सब आपको बहुत हेल्प करता है अपने आप को थॉट लीडर एस्टैब्लिश करने में, इवन व्हेन द मार्केट इज सैचुरेटेड. Next slide, Ridhima. Next slide. So why LinkedIn? ये लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि founders they come to me and they ask me कि we can, हमारे लिए Instagram बहुत अच्छे से जा रहा है, हमारे लिए Facebook बहुत अच्छा चल रहा है, we are running ads also. Then why LinkedIn, guys? Because जो भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है वो LinkedIn as a platform पर ही है. You will never interact on Instagram with the investor. आप सबसे पहले लिंक्डइन पर ही आओगे इफ यू हैव टू सर्च फॉर द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, या आपको कुछ भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दैट इज व्हाई वी यूज लिंक्डइन, अनलाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे हैं, बट स्टिल लिंक्डइन स्टैंड्स आउट. नेक्स्ट स्लाइड.
So this we have already talked about कि you can connect with the industry leaders, potential clients, आपके जो services हैं, products के लिए, किसी भी चीज के लिए, you can connect with them. And it's the biggest hub. It's the biggest professional hub, unlike any other platform. Guys, मैं थोड़ा biased हूँ LinkedIn के लिए because I have seen myself grow in last 8 years to where I am today, to be able to quit my job, to start, to sell my services. So that is why I advise this platform, no matter what, no matter what happens. It's the best. Next. अब आपको अपनी ब्रांड प्रेजेंस भी बढ़ानी है, यू वांट टू बूस्ट इट, तो एज अ फाउंडर आप अगर यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, बीट सक्सेस स्टोरीज, बीट योर फेलियर स्टोरीज, बीट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, तो मैं कंटेंट को बेसिकली लिंक्डइन पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल अराउंड 40-50% आपकी पोस्ट होनी चाहिए जिसमें आप सक्सेस स्टोरीज के बारे में लिख रहे हो, आपका कोई क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में बता रहे हो, कोई आपकी फेलियर स्टोरी आप उसके बारे में बता रहे हो, राइट. एंड मिडिल ऑफ द फनल में क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री अपडेट्स हैं, जो भी आप इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको नॉलेज है, आप वो शो कर रहे हो स्टोरी टेलिंग वे में. और थर्ड है जब आप बिल्कुल ही नैरो डाउन होके उस ऑडियंस के पास जा रहे हो जो होने वाली है मोस्टली कन्वर्ट, जो ऑलरेडी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, राइट. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप तीनों कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो while you are writing on LinkedIn. 40-50% top of the funnel, 20-30% around middle of the funnel, और last 20% जहाँ पे आप हाई एक्सपर्टीज शो करके स्टोरी टेलिंग वे में आप अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, which is also around 20%. Okay, let's move to the next slide. Attracting the top talent. Obviously, LinkedIn is also about finding the right people. अब आप फाउंडर हो, आपने कंपनी बनाई है, you need good employees to join you. तो where do they check about your authenticity? It's LinkedIn. वो आएंगे, आपके जॉब रिव्यूज वगैरह देखेंगे कि कैसी कंपनी है. That is how you can also attract the right people to work with you to be able to grow your company. And this statistic is really interesting. 67% of the recruiters say that LinkedIn hire professionals are of higher quality than those found through any other channel. So this tells us कि कितना important है LinkedIn as a platform, even if you are seeking good employees, not just investors, not just connecting with the right people, not just thought leaders. Next slide, Ridhima. Right. अब मेरे पास फाउंडर्स आते हैं एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें. उनकी प्रोफाइल्स मैंने देखी हैं, मोस्टली क्या होता है, द ओनली गैप इज कि प्रोफाइल जो है वो वन प्रॉब्लम के बारे में, वन पेन पॉइंट को एड्रेस करे. जैसे अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर स्लैश ग्राफिक डिजाइनर स्लैश कंटेंट राइटर स्लैश स्पीकर स्लैश मेंटर्स, तो आप समझ रहे हो कि कितनी सारी स्किल्स हैं जो आपने एक ही लाइन में डाल दी है, राइट. सो दिस इज नॉट हाउ यू डू योर प्रोफाइल. योर प्रोफाइल हैज टू टॉक अबाउट जस्ट वन पेन पॉइंट जो आप अपनी टारगेट ऑडियंस का पिक कर रहे हो और उसको हेडलाइन में इलैबोरेट कर रहे हो. नाउ लेट्स सी कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल बेटर. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो लिंक्डइन आप रेज्यूमे की तरह नहीं देख रहे हैं. जो रिक्रूटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, they see it as your as you, like what do you stand for. आप अपना लिंक्डइन ऐसे बिल्ड करना है कि what do you stand for as a professional. क्या आपका टोन है, क्या आपका स्टाइल है, क्या वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर. तो दिस इज हाउ यू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल स्टैंड आउट. You can talk about your expertise, your accomplishments, your profession. अब जैसे कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आओ तो फर्स्ट लाइन जो मेरी प्रोफाइल पे है, I started using LinkedIn as a platform when personal brand was not even a thing. तो फर्स्ट लाइन पे से आते ही लोगों को पता चल जाता है कि सटली कि शी इज एन एक्सपर्ट इन व्हाट शी डज. मैंने ये नहीं बोला कि मैं 8 ईयर से लिंक्डइन यूज कर रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि आई स्टार्टेड, मैंने तब स्टार्ट किया जब पर्सनल ब्रांड एज अ टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता था वर्ल्ड में. तो आई एम एबल टू बिल्ड दैट फर्स्ट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट विद माई टारगेट ऑडियंस, जो मुझे आगे
अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जो लोग मेरे को हायर करते हैं. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड रिधिमा? उसके बाद जो आपका मेन सेक्शन होता है अबाउट अस सेक्शन, आपने अपनी हेडलाइन बहुत अच्छे से क्रिएट करी. उसके बाद अपना अबाउट अस सेक्शन में आप क्या कर रहे हो, कैसे आप अपनी जर्नी एस्पिरेशंस के बारे में बता रहे हो, कैसे आप स्टोरी टेलिंग एज अ टेक्निक यूज कर रहे हो टू ड्राइव रीडर्स, है ना, कैसे आप अपनी प्रोफाइल को मतलब यूनिक बना रहे हो फ्रॉम योर कंपेटिटर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपको गूगल सर्चेबल भी बनाता है लिंक्डइन. अगर आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है विद द राइट कीवर्ड्स, विद द राइट पैराग्राफ्स, जो भी आप कर रहे हो सबके बारे में, तो इट मेक्स यू more reachable not just on LinkedIn but also on Google. You become Google searchable. Google सर्च इंजिन में भी आपकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल रहता है टू बी देयर. नेक्स्ट स्लाइड रिधिमा. सो गाइस ये 4 प्रोफेशनल फोटोज हैं, ठीक है. विच वन वुड यू चूज? आप बता सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. Third, थर्ड. ओके तान्या. एंड व्हाई it वुड यू it चूज थर्ड? it is kind of standing out from all the basic background photos, just looking at the photos and not anything that's written below that. ओके ओके. एनीवन एल्स? आप कौन सी फोटो चूज करोगे अगर आपको चूज करनी हो तो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फोर्थ. Friendly. It shows that you are in a friendly. It shows you as more friendly, and it shows you that you are more approachable. So Tanya, third और fourth में सिर्फ वही smile का फर्क है, so that you are becoming more approachable for people. Because professional होना is important, especially on LinkedIn, but at the same time थोड़ा सा अगर आपका प्रोफाइल फोटो में हेडशॉट थोड़ा स्मार्टली कैप्चर्ड है और यू आर स्माइलिंग, यू नो, यू आर मे बी यू आर डिलीवरिंग अ सेशन कहीं पे, तो वो सारी जो पिक्स आपकी जो होती हैं फोटोग्राफ्स, दे लुक रियली गुड ऑन लिंक्डइन, स्पेशली एज अ हेडशॉट. क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, राइट? तो इफ यू हैव स्पोकन ऑन एनी स्टेज, इफ यू हैव बीन इन एनी मीटअप, अगर आप उस टाइप की कोई बैकग्राउंड की फोटोज लगा रहे हो, तो दे आर मोर reliable and they're more, you know, they get you better acceptance in terms of connection requests. ठीक है. अब हम थोड़ा सा प्रोफाइल, एक लाइव प्रोफाइल बहुत सारी आई हैं, so I will pick just one and I will show you how we can make this better. Okay, let's pick this one. No, 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 nothing, nothing. I just wanted to share my LinkedIn profile as well. Okay, so Ritima, can you pick up Abhishek's profile? I'm actually not able to open my LinkedIn. So if you could just share the screen. So, all right. Yes, yes. Okay. Before that, I also see a comment from Motion Being and he has shared his company's profile. Guys, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि
आप अपनी कंपनी को रिफ्लेक्ट करते हो, यू आर द फेस ऑफ योर कंपनी. यू माइट नो वागीशा अरोड़ा बट यू माइट नॉट नो कि मेरी कौन सी कंपनी है. सो यू एज फाउंडर्स हैव टू फोकस ऑन योर प्रोफाइल, क्योंकि पीपल कनेक्ट विद पीपल. अगर आप कंपनी पेजेस देखो तो हार्डली उन पे कभी एंगेजमेंट जाते हैं, जाते भी हैं तो दे आर नॉट अ लॉट. और दिस इज वेरी मच अपोज टू बीइंग अ फाउंडर. ठीक है, सो फोकस ऑन योर प्रोफाइल बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स एंड दैट वुड tell everything about you and your company. So make sure you are the face of your company, right? Okay. Yes. रिधिमा, इसको थोड़ा सा वो करोगे, इसका थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर सकते हो? ठीक है, ठीक है. थैंक यू. तो सबसे पहले अभिषेक की प्रोफाइल में ही हैज चोजन एटलीस्ट अ प्रोफेशनल फोटो. ये तो मैं कहूंगी प्रोफेशनल फोटो है, बट अगर आपका हेडशॉट क्लियर होगा ज्यादा, या जैसे हमने भी डिस्कस किया कि यू आर स्पीकिंग एट सम इवेंट या कुछ इस टाइप की पिक्चर होगी, तो इट वुड लुक मच 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 बेटर. देन कमिंग टू योर हेडलाइन, founder and CEO at Yakshan is cybersecurity, AI and tech enthusiast. So one thing which I like about his profile is कि at least ये one pain point solve करिए. I mean, I know if I look at his profile कि what he is an expert in. But यहाँ पे ये थोड़ा बहुत abrupt लगता है. Building innovative solutions. Building innovative solutions for what? यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ी इनकम्प्लीट है. ऑल्सो इफ यू कैन मेक सम अगर आपका जैसे कवर बैकग्राउंड है, अगर आप इसमें नंबर्स पुट कर सको, हाउ मेनी क्लाइंट्स हैव यू वर्कड विद, what impact you have been able to create in terms of numbers, तो it really helps. क्योंकि फिर आप ज्यादा क्रेडिबल लगते हो इंडस्ट्री में, राइट? कि आप कब कब से कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स आपने सर्व किए. आप अपनी पोजिशनिंग इस तरह से कर रहे हो कि यू आर नॉट इवन लुकिंग एज समथिंग यू आर सेलिंग, बट आप उस लाइन के थ्रू बस अपने बारे में बता रहे हो कि आप बहुत क्रेडिबल हो, बिना ये बोले कि आप क्रेडिबल हो. समझ रहे हो आप? अगर हम नंबर्स ऐड करते हैं तो बहुत क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं विद आवर टारगेट ऑडियंस. इट रियली हेल्प्स. कैन वी मूव एट द कैन वी शिफ्ट अबाउट अ सेक्शन? राइट. अब यहाँ पे जो जो मेरे को समझ आ रहा है, दिस इज अ लॉट टेक्निकल, दिस इज वेरी डिटेल्ड, वेरी टेक्निकल. क्या हम इसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, इसको पैराग्राफ्स में ब्रेक डाउन करके आपके बारे में लिख सकते हैं? दैट वुड ड्राइव द प्रोफाइल मोर ट्रैक्शन. इनफैक्ट इवन अगर आप लिंक्डइन पे भी सर्च करोगे टर्म्स, तो हम कुछ कीवर्ड इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर फॉर द लिंक्डइन सर्च इंजन. अब ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं विद नो स्पेसेस इन बिटवीन, है ना? तो वो सब जो चीजें हैं वो सब हम लिंक्डइन पे उसको थोड़ा सा हम इसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, इफ आई वर टू पुट इट इन दैट वे. कैन वी मूव? एब्सोल्युटली. क्योंकि जो अगर हमें हमारे सपोज कीवर्ड से कोई हमें ढूंढ रहा है, सपोजिटली किसी ने टाइप किया साइबर सिक्योरिटी, या किसी ने टाइप किया एआई एंथुजियास्ट, या किसी ने टाइप किया जैसे इनकी प्रोफाइल पे था एक और टर्म थी ना, तो उन टर्म्स के लिए आप, हाँ, टेक एंथुजियास्ट, तो उन टर्म्स के लिए आप रैंक हो सकते हो इफ दे आर यूज्ड इन द राइट वे, इन द राइट मैनर, इन द राइट, आई वुड से, फॉर्म. अभी ये जो फॉर्म है ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड है. इफ इट्स मेकिंग सेंस, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके जो जो आपने किया है, आपके क्या गोल्स हैं, आपका क्या मिशन है, अपनी स्टोरी आप बता रहे हो मे बी 3-4 लाइन्स में कि व्हाई यू एंटर्ड इनटू दिस स्पेस, तो दैट वुड बी मोर रेलेवेंट फॉर योर प्रोफाइल. नीचे जाते हैं थोड़ा. हाँ, तो नीचे वाला पोर्शन स्टिल थोड़ा बेटर है जो इनका प्रोफाइल का, एटलीस्ट इट्स ब्रोकन डाउन. ये सब सही है. एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट्स, ये सब आप कर सकते हो अपने हिसाब से, और ऐड कर सकते हो अगर आपका हो कुछ तो. स्किल सेट, ठीक है. रिकमेंडेशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि अगर आपने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, फाउंडर हो किसी कंपनी के, तो अगर कुछ रिकमेंडेशंस प्रोफाइल पे होंगे तो वो ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी आप बना देंगे आपके क्लाइंट्स के साथ, जो आप जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाहोगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वो ऑप्शनल होता है, तो शायद उन्होंने उसको रिमूव किया हुआ है। उसमें आप अपनी अकम्प्लिशमेंट्स वगैरह के बारे में पोस्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह और एक्स्ट्रा करी हो तो वो सब आप डाल सकते हो। फीचर्ड सेक्शन में आपकी जो अच्छी-अच्छी पोस्ट्स हैं, जो अभी तक टॉप परफॉर्मिंग रही हैं या रैंकिंग उसकी अच्छी रही है, तो वो आप उनको फीचर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू one more profile, or should we start? I think we should go ahead with the session. जो भी प्रोफाइल रिव्यू करने हैं। Okay, done. So who should we go ahead with? We have Richard, we have. Okay, let's go ahead with Richard. Yeah, we had a word. I had a word with him even before this session. So right. So now this is one perfect example of how a profile should look. या आप देख सकते हो cover photo is exactly talking about his company. Maybe we can include some numbers here, that could make it more credible. But we have to change the whole design for that. But it's mostly recommended. Then your headline is again very crisp, very precise, very concise, totally tells us about what Dexcor stands for, right? So again, a good profile, I would say. Can we move to the, can we move down? So here in the about us section, what I feel is, आप एकदम से हम पॉइंट पे आ रहे हैं कि why you have built Dexcor, but we can give some context, like why were you passionate about building this company from the scratch? What was your intent? How did it turn to your passion? So that kind of story, because यहाँ पे हम start कर रहे हैं बिल्कुल पेन पॉइंट से टारगेट ऑडियंस के, which is also a good approach. But I still prefer कि if you can have a small story, weaving, talking about what makes you passionate about building this amazing platform for people, then it could be better. Then again, here also I want कि यहाँ पे अगर हम आपके बारे में ज्यादा बात करें रिचर्ड, as compared to your company, it would be really good. Obviously you want to talk about your company, but when someone is coming to your profile, they want to know you better. So because at the end you reflect your company, right? So that those elements can be incorporated here. But one thing which I love about this profile is it's very crisp, precise and concise. It's divided in small paragraphs. It's talking about what Dexcor stands for, which is also good, but it can just be shifted in the bottom. So yeah, overall a decent good profile. So now you have seen two examples. One was where the profile needed a lot of improvement. He also has featured section, and one where everything looks good. At least it's pretty decent. But then we can also include certain keywords, industry specific keywords. We can make this more Google searchable. For that, we do competitor analysis. We make sure that you are ranking above your competitors by taking advantage of LinkedIn algorithm, which are certain things which we do. Okay, can we move to the now the presentation?
I think ideally it takes 2 to 3 hours a day to be able to devote on this platform if you really want to grow. You also get a chance to interact with your target audience and understand their pain points better only after you start those interactions. So I ideally recommend 3 to 4 hours, but usually founders are highly busy with everything they are doing. So they put personal branding on a back burner because it's never a priority for them. They're mostly working on the product, ठीक है, और चीजें हायरिंग और अपनी कंपनी के और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट? सो दिस ऑक्यूपाइज द बैक बर्नर, and that is the only reason why the marketing efforts are underutilized, where personal branding is never seen as the most important thing, but according to me it's the most important thing, because जो दिखता है वो बिकता है. And you as founders, you have to be very vigilant with everything you are doing. अब जब बात आती है 20 to 30 कनेक्शन, आप लोगों को सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, कनेक्शन बना रहे उनके साथ, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. ठीक है? तो आप जो भी एक अगर आप दिन में सिर्फ 5 कनेक्शन पे ऐड करते हो ना, इफ यू आर हैविंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस विद देम, दैट इज मच बेटर दैन टॉकिंग टू 50 पीपल इन अ डे. So according to, it's not about the number of followers also, Ridhima. It's community led. It's a community you build on LinkedIn for yourself, for people who would actually buy your products and services. तो वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो आई सजेस्ट कि 20 to 30 connections, ज़्यादा focus on who these kind of people are, who are your target audience, what are their pain points, how are you able to solve them better than their competitors, how are you driving those conversations in those inboxes so that those people feel you know want to work with you, or they want to understand more about what you do. So that is very important. And usually founders are so busy, that is why they hire us for the personal branding work, where we take care of everything which would make their brand look stronger, more visible, and also give them the right speaking opportunities, right? Also attracting right investors attentions, because LinkedIn is now one of the most sought after platform, especially if you have to grab the eyeballs of investors. So that is why LinkedIn is highly important in that way. Hope that answered. And I spoke a lot more because there's a lot always to talk about in LinkedIn. Sure. So I would just say that I will be answering more generic questions right now on the Q&A, so that everyone is involved. If you have some company specific, highly company specific questions which you want me to cater, then we can get on a call and we can sort those out. And now let's move to the next part, because we have already talked about how profile optimization can help and all of those aspects. So let's move to the next slide. Yeah, next slide. Right. So we have also talked about how consistency or and engaging content can help you. ठीक है, जो आप stories build करते हो around your startups, around the client interactions, about your success stories, why you are where you are today. Those kind of stories, they have the potential to go crazy viral on LinkedIn. So make sure that you are posting 30 to 40% of those kind of stories, so that people can relate with your journey and they can trust you better. Now, even the funnels, there are 5 types of components which you can take up. The number one is storytelling posts, which I do a lot because they have the potential to go viral. Then the second is educational post. If you are talking about your brand, you are educating the audience about what you do and how you do it. Then we have credibility posts, then we have engagement posts, and then we have offer posts. So these are some categories which you can also use to be able to frame your content better.
And credibility posts would mostly include your case studies, how you have been working with your clients, how the results have been if you are a product or a service business. Then we have offer posts where you are, giving heavy discounts on festivities, right? So those kind of posts, and how you write them, obviously it makes a difference. So can we move to the next slide now? Right. So guys, I started my newsletter like 2 to 3 years back now, and I was nurturing my audience for 8 years. So when I started my newsletter on LinkedIn, I grew to 13,500 subscribers within 1 week, because I already had built the trust with my audience. So when I launched it, people quickly grabbed to, subscribing it. Now, I get this question a lot from founders, that we are posting, we are doing everything, still we are not getting the results. So there could be 2 to 3 reasons for that. Number one, you are posting, but you are not engaging with your target audience. Like, you're not spending time, in their DMs, or you are not commenting on their posts, or you are not building that relationship. Second thing usually is that you are posting, but the posts are not, they're not, they don't hold potential to go viral. And the third reason is they're not seeing your content. So why I highly recommend newsletters to founders who have grown their businesses to certain places, is, you starting your newsletter, because every time you do a newsletter, your audience, आपकी जो audience है, उनको notification आती है. जब आप एक post लिखते हो तो किसी को कोई notification नहीं आती that you have done a post. But if you do newsletter, there's nothing technical about starting a newsletter. Firstly, आपको blog की तरह उसको maintain नहीं करना है. एंड द बेस्ट पार्ट, जब भी आप एक न्यूज़लेटर करोगे, सबको एक नोटिफिकेशन आती है आपके बारे में, दैट यू हैव पोस्टेड समथिंग, सो मोर पीपल कैन रीड इट, they get more eyeballs. Third, these newsletters are searchable on Google. I did a newsletter of around 9,000 words, highly comprehensive, highly detailed, about how to get published, how to get featured in USA Today. It started ranking on Google. From there, I built my own organic funnel. From Google, all the traffic was directed to my LinkedIn profile, and I started getting queries for USA Today. So now you understand how this relation is built, how you can connect with your target audience from Google to LinkedIn, and how these platforms are interrelated. यहाँ एक एग्जांपल और दूंगी. अराउंड 3 to 4 years बैक आई आंसर्ड वन क्वेश्चन अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल. उसका कोई, मैंने पूरे स्टेप्स के साथ उसको आंसर किया था, और मेरे सोशल मीडिया चैनल्स इंटीग्रेटेड थे. कोरा से मेरे को ट्रैफिक सीधा आया मेरे लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे लोगों ने मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दिया प्रोफाइल मेकओवर के लिए. सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करके आई बिल्ट माई टारगेट ऑडियंस इन अ बेटर वे. सो think of ways where you can build your own funnel. How can you build your own funnel for your company, for yourself, is very, very, very important. And that is what drives the right results. All right, can we move to the next slide? Guys, is it making sense? Like, just type growth. If it's making sense. You are 18 of you here. So just type growth to let me know that all of what we are talking is clear. Perfect. Okay, great. Lovely. All right. So then again, the next step is that, you're initiating the conversations with the right kind of audience, and you are interacting with them in a tone which they feel more comfortable in. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी. This is how DM conversational framework works for me. पहले तो आपको अब जो भी मैसेज करो बहुत क्लैरिटी से होना चाहिए, ठीक है. आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है इस अप्रोच में. You don't have to give up. And third thing, you have to make sure that you are targeting the right people. क्योंकि अगर आपकी वो टारगेट ऑडियंस है, तो आप शुरू से उनको सेल
नहीं करोगे कोई प्रोडक्ट, व्हाट यू डू इज यू टॉक अबाउट देम. जो फर्स्ट मैसेज आपका होगा, it should be about them, not about you or your company. Okay, so how you do that is, supposedly that founder or that person who you want to approach, investor, anyone, you start with the first touch point, which is highly personalized. It's hyper personalized, so that they can connect with you, they want to connect with you. अगर आप लिख देते हो हाई जस्ट फाउंड यू ऑन माई नेटवर्क एंड वुड लव टू कनेक्ट, तो ये बहुत जेनेरिक मैसेज है. As opposed to hi, I just went through your podcast and really loved. You can talk about 3-4 lines and you know what he said. उसके बाद आप अपना point of view उसके अंदर express करो and then send a connection request. Now this is highly personalized thing, right? ऑटोमेशन हम वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन से क्या होता है, अगर आप 10,000 लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट सेंडिंग देम वन मैसेज. Those are mostly spam content. That is how people now tag it. It's spam content, right? And you don't want to be disguised as a spammer. So make sure कि जो आप request send कर रहे हो, तो highly personalized. आप 3 लोगों से भी दिन में connect करो ना, that is better than connecting with sending mass emails of 10,000 20,000 people. बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, यू आर डूइंग मास बल्क ईमेलिंग. सो आई डोंट recommend that approach at all. Instead, make it more personalized so that it makes sense for your target audience. Hope that's clear. Okay, now let's move to the next slide. Right. So Sales Navigator is again one of the LinkedIn best tools where you can filter the people according to your criterias, like employee size, like which category you want to target, all those things. There are a lot of filters which you use on Sales Navigator to build your target audience better, to build your sales pipeline better. But that happens once you have built a good connection with your clients in next 60 to 90 days. So give that life cycle needs to be taken care of 60 to 90 days, guys. ठीक है, ये नहीं कि आप सेकेंड ही मैसेज में उनको प्रोडक्ट और सर्विस पिच कर रहे हो, जस्ट वन मैसेज पर्सनलाइज छोड़कर. So drive those conversations where how the client is reacting, like is he more into formal tone, informal, professional, humorous, so that you can adapt to that style and get in their good books before you pitch them. So that is very important. Next slide, Ridhima. Next slide. Right. So we have already talked about this, how personalized messages can spark the conversations that lead to sales. And it's all about connection which you can build, and different criteria which you can use on the Sales Navigator, like industry, title, company, all of that. Okay. So next. All right. Next slide. Yes, we have almost talked about all of this. Next slide. Yes. So this is again a very important part. So people ask me ki how should we use the hashtag? Should we use the hashtags on LinkedIn? I say yes, you should use hashtags, but not more than 3 to 4. It's unlike Instagram, जहाँ पे आप बहुत सारे hashtags use करते हो, but you can use 2 to 3 hashtags which are uh, related to your industry. So because people also search hashtags, और आपकी post कभी-कभी it shows in those searches. So hashtags can be used. Right. Done. Next. So again, how to create viral content? It's all about storytelling. We have talked about this in detail. आप ऐसे भी लिख सकते हो, I am very hard working, dedicated person, right? अगर आप इस टाइप का कंटेंट लिख रहे हो लिंक्डइन पे, तो देन द चांसेस ऑफ यू इवन गेटिंग रैंक्ड और you getting in those engaging posts are very less.
So that is the most important part about LinkedIn, the art of storytelling, how you can tell your story in 10 different ways and keep the essence the same. So that is very important. Now this one of my posts got almost 49,000 likes. It went crazy viral, but trust me guys, I didn't get a single lead from this. Why? Because people resonated with my journey, but they didn't resonate with my product or service. Now, this is very unlikely, but one of the posts which I wrote got just 100 likes but got me 5 leads. Because as I say, it should be a mix and match of top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel content. When all three come together, that is where your profile starts getting more recognition than ever. Next slide, Adima. Yeah, so we all know this. I would not repeat that. Understanding your target audience's pain point is very important. We just did Richard's profile, and you could see that the first few lines talked about those pain points. So it's a good thing to do. It's a good thing to do. Next slide. Yes, we have already talked about consistency and timing. Next slide. Right. Next slide. So we already talked about how engagement rates, connection growth, profile views, they are major three metrics. But at the same time, don't fall for, getting a lot of likes. Make sure that your post is getting more impressions. You are getting more queries in your inbox, because that is equally important when you are building your business, when you are building your company. Next slide. Right, guys. Now we have taken care of everything, I would say, in whatever time we had to talk about LinkedIn. Now I have something really really amazing for you, and I am giving one free profile giveaway to one of you who would be tagging Visey and me for your LinkedIn work, like what this session was to you, how much you loved it, what all were your takeaways. If you are creating a post and you are putting it in the group, I will choose one person who would be there for their profile optimization, which I will do myself with my team. And now I have something even more crazier for you. So Ridhima, could you open that? Guys, for the first time in collaboration with Visey, I'm doing this. And trust me, this is a no-brainer offer for those who really want to take their companies to the next level, or really want their profiles to look, really optimized, so that you can reach out to the right people. You can, build that relationship with them. I'm giving you 30. I will be working with you for next 15 days, and we will be doing 30 strategic connections, 30 connections where I will tell you how I created those messages, and I work with you very closely. You get full complete done for you LinkedIn profile optimization, right? You will get hands-on support from me and my team on how we are going to make this happen for you. You will get two strategic one-on-one calls with me, where I will create your roadmap for LinkedIn for the next 6 months. And you get access to my private community with two free ebooks where you learn more about viral hooks and how you can create them in a concrete, concise way. So this is my package, just valid for next 2 to 3 days, where you get everything at just 6,000 rupees. And can we move to the next package, Ridhima? Right, right. And the next slide, the only thing which is a bonus for you is that you get
12 highly custom narratives which I will write for you so that you understand what viral content stands for. And these narratives would be all different so that you understand different tonalities and styles of narrative writing. So everything else remains the same. So if you want to opt for something like this, you could reach out to Ridhima, you could connect directly with me, and we can make it work. Right. And now this would be a 30-day package, yes. So it has everything that is included in the first package except the 12 narratives that I will create for them. And now I'm opening the floor to for question and answers. And I would, Yeah, sure. As always, thank you so much, Redima. So my question is, what's the common mistakes that beginner as well as some professional does that we need to avoid, and how we can avoid it exactly? right. So mostly what I have seen is the art of procrastination. Sometimes we are not perfect in something, so we don't even want to try it out, right? Then comes the writer's block, where that is like कि मैं कुछ post करूँ और उस पे नहीं आए engagements, how would I feel? Having those kind of doubts, these are usually the mistakes which people commit because अ, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग. So make sure that you are not procrastinating building your personal brand because that is most important in your marketing activity, and make sure you are connecting with the right people because at the end, to build a strong brand what you need is not just trust and credibility but also visibility. तो ये दो मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है कि हम क्यों पोस्ट करें, क्या पोस्ट करें, और हम कितना उसको परफेक्शन की तरफ लाने की बजाय हम पोस्ट ही ना करें. सो दैट्स इट. Personal profile anytime. सो एनी टाइम पर्सनल प्रोफाइल हम इस पे बात कर चुके हैं कि हाउ कंपनी पेजेस दे गेट लेस ट्रैक्शन एज कंपेयर टू पर्सनल प्रोफाइल्स, राइट? और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग, दैट शुड आल्सो बी फाउंडर लेड. सो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल्स आर गेटिंग मोर ट्रैक्शन दैन एनीथिंग एल्स.
D2C में आप सबसे पहले अपनी कस्टमर स्टोरीज वगैरह बता सकते हो थ्रू अगेन नैरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक behind the scenes how the company is growing that can also be included in some of the post narratives that you write. बाकी ये बहुत specific question I really need to study the brand see all those things. I would like कि अगर आप थोड़े generic questions पूछें यहाँ पर so that everyone can gain from it and we can take the personal backstage. Yeah, Utkarsh has raised. Sure. Thank you so much, ma'am. My question is like, as we have gone through multiple profiles and saw the different parts of them, like profile headlines, then about, then all those things. So my question is like, which part of the profile was more important to be optimized, whether it's headline or about section or to be discovered? Yep. Right. Really nice question. I would say two parts are very important. सबसे पहले जो आपकी हेडलाइन होती है और जो सेकंड आपका अबाउट अस सेक्शन होता है वहां पे दैट गिव्स यू मोस्ट चांस फॉर डिस्कवरेबिलिटी दैट मेक्स यू मोर सर्चेबल ऑन लिंक्डइन engines and also on Google algorithms because some of these profiles they also rank on Google. सो अगर आप वागीशा अरोड़ा का भी टाइप करो तो लिंक्डइन आपको मेरा टॉप 2-3 में दिख जाएगा. So that kind of optimization needs to be done so that your profile always stands out in front of your competitors. अगर लिंक्डइन पे कोई आपको सर्च भी कर रहा है और अगर पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट तो बहुत सारे होंगे राइट बट आपका प्रोफाइल कहाँ पे वहां पे शो हो रहा है कहाँ से आपके पास क्वेरीज आ रही हैं दैट मेक्स इट मोर ऑप्टिमाइज्ड. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होगी तो you will get more queries for your product, for your services, people wanting to know about you. I hope that answered your question. Definitely. Perfect. No, matlab I don't have anything generic as Vagisha said. I do have some thing that's not generic questions. I do have that. I would love to take them off the stage right now. I would love to take them off stage and we can Sure, connect sure, sure, one on one and discuss them. Yeah, sure. sure. Yeah. All my questions one by one? Alright, just give me a second. Yeah. So now that's a really specific one, but I would still, tell you on certain things you can do. Even if you are a student, I'm sure you have been a part of certain committees, or you are being very participative, or you are having a lot of interactions. So make sure you are putting them out because that would help you build better credibility. Supposedly, you organized some event recently, or you did something. Put that in a way where you are seen more as a founder rather than just a student where I would say it's all about the way you are going to create those kind of posts which are not showing you as just another student in the backyard. So that's very important. Alright, thank you. Raghavam, I want to ask one question that I started my company 2 months ago, right? And I was not like starting my personal branding and all. I just posted 2 videos. Like first day, I just said I am starting this my journey and documenting for 60 days. And in second reel, I just shared some Durandar
movie, just Durandar movie is spiking up, right? So that's why I want to capture the trend. So there I just tried कि हाँ मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ, और उसके बारे में मैंने एक लर्निंग बताई कि भाई अक्षय खन्ना सर ने कैसे लाइक जो उनके डाउनफॉल के बाद भी बाउंस बैक करा, राइट? सो ये चीजें अभी तक मेरे को ठीक है, बट अभी मेरे को मेरी जर्नी शेयर करनी है एज अ स्टूडेंट फाउंडर, एंड आई एम बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशनल सोशल मीडिया लाइक ऑरा मीटर, राइट? सो मेरे को जर्नी शेयर करनी है, बट मैंने जो 2 महीने पहले जर्नी बिता चुका हूँ, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले लाइक बहुत ज्यादा मेरा टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा था, काफी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती थी, काफी चीजें होती थी। नाउ वी आर पुटिंग 5 to 10 लाख, और 2 4 ऑफर मिले, लाइक 1 से 2 करोड़ तक के भी ऑफर मिले। सो आई वांट टू शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट मैं अब कैसे करूं, क्योंकि 2 महीने पहले की चीज है और अब मैं जर्नी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कैसे करूं वो चीजें मेरे को दिक्कत दे रही है। सो आई वुड से कि बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, पोज़ीशन करना अपने आप को राइटली। आप कुछ भी उठा के पोस्ट कर रहे हो रैंडम रील्स के थ्रू, आई थिंक दैट कुड बी अ मेजर थिंग। एंड आपने जो पोस्ट किया वो 2 मंथ्स पहले किया, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने एफर्ट्स में टू क्रिएट द नहीं कंटेंट। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग 2 मंथ्स पहले किया। मैंने अपनी स्टार्टअप जर्नी 2 महीने पहले करी थी। डॉक्यूमेंटिंग में आज 2 दिन से कर रहा हूँ, लास्ट अब जस्ट मैंने यस्टरडे स्टार्ट करा है। 2 दिन से मैं कंसिस्टेंट हूँ, आज मेरा थर्ड डे है, आज भी मैं कुछ शूट करके डालूंगा ऐसा। स्टार्टअप जर्नी मेरी 2 महीने पहले स्टार्ट हो चुकी है, राइट? सो आई वॉन्ट टू शेयर ऑल दोज जर्नी फ्रॉम नाउ डेज। Okay. So then I would say you can create again more storytelling content कि आपने as a student क्यों आपने ये niche pick किया, what makes you passionate about talking about these films or these reels, और आपने क्या क्या उनसे lessons learn करे। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि आपका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों के लिए दैट इज इंस्टाग्राम, नॉट लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन पे आपको उस टाइप की ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, स्पेसिफिकली इफ यू आर क्रिएटिंग रील कंटेंट। और रील्स तो शायद अब लिंक्डइन ने इट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड, सो आई डोंट नो व्हाट। हाँ, तो इंस्टा का मेरे को आइडिया नहीं, आई एम मोर ऑफ अ लिंक्डइन एक्सपर्ट अंकित। आई एम नॉट द राइट वन फॉर योर क्वेश्चन। भाई हमें दे दो अपना कंटेंट, हम कर लेंगे। ओके, आई वुड से दैट एज अ फाउंडर इट्स वेरी वेरी टफ टू be in 3 4 boats at the same time simultaneously. But what you can really do is, if you really want to at least start, then at least start posting। जो आपके लिए सबसे इजी होगा ना पोस्ट करना, होगा आपने ये ब्रांड क्यों चूज किया और आपने कैसे इसको बिल्ड कर रहे हो। सो बिहाइंड द सीन्स आप शेयर कर सकते हो, आप ये शेयर कर सकते हो कि आपके क्लाइंट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। बट अगेन आपको सटली वो जो अथॉरिटेटिव फिगर बनानी है, अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी है, दैट शुड हैपन वेरी सटली, बोल कर नहीं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड पर्सन। आप इसको इसी लाइन को कैसे पुट कर सकते हो with a story, like I met one of my friends and we were just sitting in a coffee shop drinking coffee, and you know I just learned one of the most important lessons of my life sitting there। कुछ ऐसा, मतलब जो स्टोरी बिल्ड में आप अपने बारे में बता भी दो कि हाउ ट्रांसपेरेंट योर कंपनी इज, हाउ गुड यू आर डूइंग, और ऐसा लगे भी ना कि आप प्रमोट कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड सटल सेलिंग, सटल आर्ट ऑफ सेलिंग। वो आपको करनी पड़ेगी मास्टर। उसके लिए आई वुड से आई हैव 48 वायरल टेम्पलेट्स जो आप यूज कर सकते हो। I could be sharing that with you if you go ahead with we working together and stuff like that. Okay, Utkarsh wants to ask. See, right, right. Stories have to be authentic. मैंने बोला था टोन, स्टाइल, कंसिस्टेंसी, ये थ्रू आउट रहना चाहिए आपके प्रोफाइल के और जो आप पोस्ट कर रहे हो। आप
आपने अपनी प्रोफाइल बताई बनाई बहुत ह्यूमरस सी, हो सकता है क्योंकि आपका वो स्टाइल है और आपकी पोस्ट है बिल्कुल अलग, तो वो जो डिफरेंस है वो दिखता है, वो पता चलता है कि हाँ ये रियल है या रील है, ये रियल वर्ड है कि रील वर्ड है, राइट। और स्टोरीज आपकी ऑथेंटिक तब होंगी जब आप अपने ब्रांड के लिए जितने पैशनेट हो गए, आपके पास उतनी स्टोरीज निकल के आती हैं। उसमें ही हम हेल्प करते हैं। वी हैव 45 minute brainstorming session with clients where we ask them questions, they answer those questions, and basis that we create those stories. So that is why the credibility and authenticity is never, it's never diminished, if that makes sense, Ridhima. Sure, sure. So, ma'am, as we are in AI trend and so specifically, with AI, we use for is that exactly for what purpose to gain some kind of reach or engagement or even boost. So, in a nutshell, I'm actually asking what are your secret AI tools that you use? Okay, there are no secret AI tools which I use. In fact, I would suggest दैट लिंक्डइन के लिए आप अगर कंटेंट आइडियाज यूज कर भी रहे हो चैट जीपीटी से लेके, देन ऑल्सो यू नीड टू पुट देम इन अ हाईली 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 पर्सनलाइज्ड वे। जो आप लिख रहे हो सकता है वो 100 लोग और लिख रहे हो, राइट। सो योर टोन, योर ब्रांड नीड्स टू स्टैंड आउट देयर ऑल्सो। अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले भी रहे हो, ऑल द टाइम सब ले रहे हैं आप, बट हाउ यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप क्या क्या राइटिंग प्रॉम्प्ट्स देख रहे हो, दे रहे हो चैट जीपीटी को, वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। लाइक अगर मैं बोलूँ डिजाइन लोग कैनवा पे बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ, then why do we hire still a then do why do we still hire a designer? Because they would make our work more impeccable। और वही रोल होता है पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट का, या जो भी स्पेशलाइज्ड आपकी सर्विसेज के लिए लोग होते हैं। So there are no secret tools that we use, but yes, we make sure that everything we are doing is with a lot of authenticity. Got it. Right. Absolutely. Absolutely. Got it. आपको अगर ट्रैक्शन कम आ रहा है तो आप प्रोफाइल नहीं थोड़ी ना बनाओगे। ऐसे तो जब मैंने अपनी जर्नी 8 years पहले स्टार्ट करी तो 5, 10, 15 लाइक्स आते थे, मतलब कमेंट्स भी नहीं होते थे, कोई इंप्रेशंस नहीं होते थे। आई सजेस्ट द वे यू कीप गोइंग, द वे यू जस्ट आर मोर कंसिस्टेंट, दैट इज योर की ऑन लिंक्डइन। अगर आप, आई नो कि बहुत जल्दी हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हमारे लाइक्स नहीं आते, वी आर नॉट गेटिंग इम्प्रेशंस, और हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्रिएटर्स हैं, राइट। और क्रिएटर्स दे कैन नॉट जस्ट स्टॉप जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट वर्किंग। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग and no need to build another profile, just revive yours by following all the tips we talked about today in this session. Try more storytelling posts, try more personalized posts, try more uh, connecting with the right people, and that is how you will revive your profile again. Okay, thanks, Anisha. All right, perfect. Yeah, so I just had another question. What is the most effective way for like a D2C brand or community like Woofer to position itself differently from traditional pet We stores? will take it backstage. We will take it backstage, Swara, because this is very brand specific All right. and this needs a lot of insights. Okay.
works. Thank you. All right, guys. Acha, all right. Thank you. All right. So I would say ki I would like to take these questions offline. Why? Because they are not relevant for everyone. So if we can have more generic questions right now, which are less brand specific, it would be great. In any case, we will connect on one-on-one call and I can answer your questions uh, next week. But they would be more brand specific. So let's, keep it outside of this forum. Sure, sure. Thank you very much. So my question is like, let's suppose मैंने सारी corrections कर ली LinkedIn पे and whatever the factors I need to match, I have done that. So how soon I can get a result from LinkedIn ki like, okay, this particular profile has done all the things and now we can just ready to go to publish it on higher search rankings and all those things. I cannot give you a specific time frame because even I am not aware of that honestly. But what I can say, it takes 1 or 2 months approximately to be become more reachable, and that too when you are also doing your posts regularly. So अगर एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज डेड पड़ी है और आप कुछ उस पे पोस्ट ही नहीं कर रहे हो तो लिंक्डइन टेंड्स टू रैंक यू नॉट अकॉर्डिंगली. अगर आप पोस्ट भी कंसिस्टेंटली कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज है, इट्स अ मल्टी फोल्ड अप्रोच आई वुड से व्हिच यू हैव टू ऑप्ट फॉर टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, नॉट जस्ट वन थिंग. Yeah, thank you very much. श्योर. सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था वो लिंक्डइन न्यूज़लेटर्स थे. दे आर द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू ग्रो ग्रेजुअली, बट एट द सेम टाइम इट्स अ रियली गुड प्रोसेस. क्योंकि क्या हो रहा है, आप गूगल पे रैंक हो रहे हो, वहां से आपका ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रहा है लिंक्डइन पे, तो न्यूज़लेटर्स आर अ मस्ट. सेकेंड थिंग यू कैन डू इज यू कैन ऑप्ट फॉर द डीएम स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप 30 कनेक्शंस ऐड कर रहे हो, ठीक है, विद इन 1.5 week, so that not just adding them now again randomly, but setting up a highly personalized approach to it. Third thing जो आप कर सकते हो, you can do more LinkedIn lives, you can get your audience attention there. And fourth thing which you can do is engage with others content. आप चाहते हो लोग आपके content के साथ engage करें, but make sure you are also doing that with others, so that you are as founders you have to go with a community led thing, not just anything else. You just have to focus on building your own community. All right, guys, I think we have already had a really good session. I really enjoyed all the questions. I would quickly like to wrap this up.
And whatever questions, Swara, Tanya, you guys have, we can obviously connect offline and see how I can help you better. Okay? Yeah, I think it was a wonderful, wonderful collaboration with Visey. It was really seamless, taking this session with them. And Ridhima and Jonti, they have been amazing support. And I definitely loved being here. And thanks for all the amazing questions. I think this audience is really good and they definitely understand LinkedIn as a platform. And I hope whatever we shared today, you're going to implement. And don't forget to tag us on LinkedIn, and we would definitely give. I would give one profile giveaway to one of you. So make sure you are doing the things. All right, guys.